Okay, good. Thank you for confirming. So let's start with this then. So सबसे पहले sequences, it ends up being a bit difficult sometimes, some parts of it, but generally it's a relatively easier topic. In terms of concepts, मतलब इसमें concepts बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है. There's just a few basic things that you need to know about. But yes, sometimes the questions that you have to deal with, it do end up being a bit tricky. So we will look at a few of those questions, but let's start with the basic concepts first before we go to some of those questions. Okay, so let's start with what a sequence is all about, right? So let's start with a bunch of numbers here. So let's say I've got this set of numbers, 1, 4, 7, 10, 13, and so on. Just by looking at this number, you can see this certain pattern that is there. And the pattern is, okay, if I were to ask you, what would be the next number after this? So 1, 4, 7, 10, 13, anyone can actually tell me what the next number would be because it's a very clear pattern there. क्या कर रहे हैं हम हर number के लिए? We're adding 3 to get the next number. हर दफा हर next number के लिए हम basically 3 add कर रहे हैं. Right, so next number in this case would be 16, then it would be 19, then it would be 22, and so on. तो आप इस तरह के numbers का patterns को complete कर सकते हो by looking at the previous numbers, what's happening before that, and then looking at what is happening from one term to the next. तो यहाँ पे बहुत simple था कि 3 हम add करें. This is a number pattern or number sequence कि एक sequence के अंदर number चल रहे हैं किसी rule के को follow करते हुए आप next number लिखते जा रहे हो, right? And now this is a special type of sequence जिसको हम कहते हैं an arithmetic sequence. Yeah, very good. So it's called an arithmetic sequence, और हम इसको या आप A levels में भी जाके देखोगे इसको हम arithmetic sequence भी कहते हैं, and we also call this a linear sequence. Why is that? Because nth term लिखेंगे, we will figure out that it's going to be linear. अच्छा. But before we go to that, let's consider some other types of sequences, for instance. So for instance, you can have a number like this. आपके पास इस तरह हो सकता है 1, and you can have 4, 9, 16, 25, and so on, right? तो ऊपर तो हमने एक sequence देखा जिसके अंदर कोई चीज add हो रही थी, right? एक constant number add हो रहा था. But there's some other common types of sequences that you have encountered before in your study. For example, something like this: 1, 4, 9, 16, 25. What do you think? What special kind of numbers are these? ये numbers क्या हैं सारे? What's so special about these numbers? 1, 4, 9, 16, 25. All of these are basically perfect squares, right? They're all square numbers, exactly. So they're all square numbers. 1 जो है, that's 1 का square. Then you have 2 ka square, 3 square, 4 square, 5 square. So the next number therefore should be 6 square, right? So that should be 36. And then it should be 49 because it's all numbers square over here, right? So 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and so on, right? So that's what is happening here. Similarly, you could have something like this: 1, 8, 27, 64, 125, and so on. So you see what's happening here? So again, this is also something that you should be aware of. So what do you think is happening here? यहाँ पे क्या हो रहा है? These are all cube numbers, right? Because आपको पता है कि 1 का cube 1 होता है, right? 1 cube is 1. Then you have 2 cube. Then you have 3 cube, 4 cube, 5 cube, and so on. So you can write the next number after that. The next number should be 6 cube after that, and 6 cube. If you evaluate that turns out to be 216. The next number therefore should be 216, right? So these are some common patterns that you need to know of. So ek to you should be familiar with sequences like these. अच्छा, इसमें एक important चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, and that is how to write the nth term of these sequences, right? So सबसे पहले हम एक अपने सबसे basic वाले sequences पे start करते हैं, and that is the arithmetic sequence, right? So that's the arithmetic sequence. या फिर मैंने कहा इसको हम कहते हैं linear sequence,
which you will realize when you write the nth term, वो जो है एक linear power होती है n की, so that's why it's called a linear sequence. So let's write one of those sequences again, जो हमने last page पे रखा था. So we had 1, 4, 7, 10, 13, 16, and so on. So this is one sequence that we had. अब कोई भी sequence जिसके अंदर जो difference है from one term to the next term, if that is constant, which is in this case, अगर आप यहाँ पे difference देखो, 1 और 4 का difference क्या है? That's 3. 4 और 7 का difference क्या है? It's 3 again. This difference is 3 again. This difference is 3 again. When you have a constant difference, आप क्या कहते हो? This is going to be an arithmetic sequence, जिसको हम अक्सर short language में AP भी कहते हैं, arithmetic progression, or let's actually not go into that. So let's just call this an arithmetic sequence. Okay, so this is called an arithmetic sequence. जब आपका ये difference constant आ जाए, जब भी difference constant आ जाए, इसको हम कहते हैं arithmetic sequence. ठीक है? अच्छा, अब इसकी अगर हम टर्म नंबर्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी? फर्स्ट टर्म वाज 1, सेकंड टर्म वाज 4, थर्ड टर्म वाज 7, फोर्थ टर्म वाज 10, फिफ्थ टर्म वाज 13, सिक्स्थ टर्म वाज 16. Now if somebody was to ask you, okay, what is going to be the 90th term? So 90th term यहाँ पे क्या होगी? How do you tell that? आप क्या बस ऐड करते जाओगे 3, 16 plus 3 करोगे, 19 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर 22 आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी. That will take a lot of time, right? So it's going to be a really slow process. So we need a way to be able to figure such things out quicker. For example, हमें 90th sequence यहाँ पे figure out करना है अगर, तो we need to figure out a way कि हम वो फौरन से कर सकें इसी तरह से. ठीक है? Now, the idea here is that we find the nth term of the sequence, जहां पे हम कोई भी value इसमें input करें, तो हमें उस वो वाली term का result हमें मिल जाए. For example, हमें 90th term चाहिए अगर, 90th value यहाँ पे नीचे क्या होगी, हम बस 90 उसके अंदर input करें, हमें उसका result मिल जाए. That's called the nth term. अब arithmetic sequence की nth term हमारे पास कैसे आती है? We've got this formula for that, and that's called a plus n minus 1 multiplied by d. This is called the nth term of an arithmetic sequence. This is the nth term. Now I'll tell you what we mean by this now. Nth term of an arithmetic sequence. जब भी आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस हो जिनमें ये डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे हो, आप क्या कर सकते हो? उसकी nth term फाइंड करने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, अब इसमें ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? a here is the first term. जो भी आपके पास उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ रही है, that is your a. n is just the number of term. तो n तो वैसे ही रहेगा, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू अभी इनपुट नहीं करनी for finding the nth term. But then you have d, that is called the difference, or you can say that's the common difference. Right? सारों का difference common है. हर पूरे पैटर्न के अंदर सारी consecutive terms का difference constant आ रहा है. So that's called the common difference. So if you were to find the nth term of this sequence, जो मैंने ऊपर लिखा है, उसमें आप देखें, what is my first term? What is my first term? तो a से represent कर रहे हैं. The first term is 1. Right? पहली term 1 है. What about the common difference? Difference क्या है terms का? That is 3. मैं कहता हूँ d is equal to 3. Okay, a is 1 and d is 3. So my nth term therefore, जो मेरी nth term होगी इस sequence की, जो मैंने ऊपर लिखा है, that's going to be a plus n minus 1 into d. a क्या है? 1 plus n minus 1 times the difference. The difference is 3. So we can just simplify this now. We get 1 plus 3n minus 3, and that gives us
3n minus 2. This is the nth term of that sequence that we wrote at the top. अब इसका क्या मतलब, हमने 90th term फाइंड करनी थी. अब 90th term कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर 90th term चाहिए होती है इसके अंदर, how would you find that? We would just input 90 in this formula. We say 3 into 90 minus 2. n की जगह हमने क्या किया? n की जगह हमने इनपुट कर दिया 90 because we have found the nth term. क्या मतलब कि जब n होगा तो हमारी जो टर्म होगी that will be 3n minus 2. तो जब 90th term की बात करें, n की जगह बस आपने 90 इनपुट कर देना है, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. So that's going to be 270 minus 2, which is 268. So we don't have to complete that sequence from 6 to 90. सारी values लिखने की जरूरत नहीं है, हम वो exact वो term find कर सकते हैं using this formula, right? So that's the first thing that you need to know of, how to find the nth term of an arithmetic sequence. Okay, how to find the nth term of an arithmetic sequence. Now let's write down another sequence here. So for instance, we have 12, 7, 2, minus 3, minus 8, minus 13, and so on. What type of a sequence do you think this is? What type of sequence is this? Do we have a common difference here? Do we have a common difference here? इसमें common difference आ रहा है कोई हमारा? Yes, no? We do have a common difference, right? Because आप देखें consecutive terms का difference कैसे आएगा? So आप difference किस तरह find करोगे? अब यहाँ पे देखें 12 और 7. Next term में से previous term अगर आप subtract करो, what do you get? You get minus 5. इसी तरह से 2 में से आप 7 minus करो, what do you get? You get minus 5. Minus 3 में से 2 minus करो, what do you get? Again you get minus 5. So कोई भी आपने डिफरेंस फाइंड करो, कोई भी आप डिफरेंस फाइंड करो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, रिमेंबर जो डिफरेंस होता है, जो d की वैल्यू होती है हमारे फॉर्मूला के अंदर, वो होती है एनी ऑफ दीज टर्म्स. कोई भी दो टर्म्स आपने उठानी है, ठीक है, उसमें से बाद वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करनी है. सो यू कैन से नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करनी है, तो आपका डिफरेंस आएगा वहां से. ठीक है, सो माइनस 13 माइनस 8 कर दें, दैट विल आल्सो बी माइनस 5. माइनस 8 माइनस 3 करें, वो भी माइनस 5. सो सारे डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे हैं. हाउ डू यू फाइंड द nth term of this formula now? Your first term is 12. Your difference turns out to be any of these differences. तो सारे माइनस 5 आ रहे हैं. So nth term क्या हो जाएगी फिर? Your nth term is going to be equal to a plus n minus 1 times the difference 12 plus minus 5 minus 1, 12 plus n minus 1 into minus 5. You evaluate this, it turns out to be 12 minus 5n plus 5, which is equal to minus 5n plus 17. That is your nth term of this formula. Okay, Isha, we do it the other way around. Right? So अगली वाली term, बाद वाली term में से पिछली वाली term minus करनी है. बाद वाली term में से पिछली वाली term minus करनी है. ठीक है, so 2 में से 7 minus कर सकते हैं, right? 7 में से 12 minus कर सकते हैं. So आपने बाद वाली term में से पिछली minus करनी है. ठीक है, so this is what we get. This is the nth term of this formula. All right. It starts from 12. It doesn't start from 6 here. It's starting from 12. अगर वो 7 से start हो रहा होता, हम यहाँ पे 12 की जगह 7 कर देते, and that's it. And we find that nth term. अब यहाँ पे हमें, for example, find करना होता, what is the 60th term of the sequence? 60th term क्या होगी? हमें सिर्फ क्या करना होगा, n की जगह 60 input कर दें. So minus 5 into 60 plus 17
-5 into 60 क्या होता है? That's -300 plus 17, that will be -283. That will be your 60th term. Okay, अब आप कोई भी term इस तरह से figure out कर सकते. All right, so that's how you evaluate arithmetic sequences. उसकी nth term इस तरह से figure out करते. Okay, अच्छा. Then we talked about some other kinds of sequences. For example, we talked about the square sequences, right? So square sequence में क्या होता था? In square sequences, we had something like this. Square sequences में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से term numbers हैं, so let's say we have term number 1. So let's say term number, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये हमारे पास एक sequence है, let's call the sequence A. अब ये sequence है, for instance, so let me just erase that and use a different color. So let's say the sequence is, let's call the sequence number A, and that's 1, 4, 9, 16, 25 and 36. अब इस पे हम कहते हैं nth term क्या होगी? अब देखिए nth term क्या मतलब है कि ये जो term number है, पहले 6 आ रहा है, 6 की जगह n लिखा होता, आपकी corresponding term यहाँ पे क्या होती? How do you figure this out? How would we figure this out? Yusuf will come to that. We will come to that case. So let's hold on for a few minutes. We will come to that. So what happens here? अब देखिए हर टर्म को हम किस तरह करें? For example, 5 यहाँ पर था जब टर्म नंबर, तो हमारे पास 25 कैसे आया? By squaring this. इसको हमने स्क्वायर किया ऊपर वाली वैल्यू को, तो हमारे पास नीचे वाले वैल्यू आ गई. तो ये जो A सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर A, इसकी nth term क्या आएगी? इसकी nth term is going to be n square. Okay, इसकी nth term is going to be n square. But now let's say we have another sequence. We have a different sequence, and that looks something like this. Let's say we've got 9, 16, and 25, 36, 49, 64. What about the nth term of a sequence like this? What about the nth term of a sequence like this? How do you evaluate this? अब ये भी सारे squares हैं, right? ये भी सारे these are not cubes. These are not cubes. 16 is not a cube. 16 is not a cube. 9 is not a cube. 25 is not a cube. Only 64 is a cube here. भी 4 का cube होता है. बाकी दो में से कोई भी cube नहीं है. These are all square numbers. 9 is a perfect square. 16 is a perfect square. ये सारे हमारे पास perfect squares हैं. लेकिन 1 का स्क्वायर तो 9 नहीं होता, लेकिन पहली टर्म हमारे पास 9 आ रही है यहाँ पे. How do we write the nth term of the sequence now? How do we write the nth term of the sequence now? Now think about this. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाँ, इसको रिलेट करें आपके टर्म नंबर से. जब आपके पास टर्म नंबर 1 है, जब आपके पास टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 1 के केस के अंदर आपके पास रिजल्ट 9 आ रहा है. टर्म नंबर 1 के केस के अंदर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? You're getting 9 in that case. ठीक है? टर्म नंबर 1 में you are getting 9. 1 पे 9 आता है. अच्छा, 2 के ऊपर 16 आ रहा है. थर्ड टर्म turns out to be 25. हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर तो 9 नहीं होता. स्क्वायर किसके स्क्वायर का 9? किसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है. So basically जो वैल्यू नीचे है, this is actually 3 square. 3 square कैसे आएगा? इसी तरह अगली वैल्यू क्या है? This is actually 4 square. This is 5 square. This is 6 square. This is 7 square. This is 8 square. Right? तो जो भी ऊपर टर्म नंबर था, ये जो नंबर यहाँ पे नीचे लिखा होता है, उससे 2 यूनिट्स ज्यादा होता है. 2 यूनिट ज्यादा होता है. ऊपर 2 था तो नीचे 4 है, ऊपर 1 था नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 5 है, ऊपर 4 है नीचे 6 है. हमें क्या करना पड़ रहा है? अगर इसको मैं और तरह लिखूं, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ क्या रहा है? I got 1 plus 2 का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से. दिस इज 2 plus 2 का होल स्क्वायर. दिस इज 3 plus 2 का होल स्क्वायर.
दिस इज 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो हम 2 ऐड करते हैं और फिर उसको स्क्वायर करते हैं। जो हमारी टर्म नंबर होती है उसमें हम पहले 2 ऐड करते हैं, उसके बाद उसको स्क्वायर करते हैं, राइट? देन यू हैव 5 + 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो व्हाट हैपेंस हियर इन द लास्ट केस, जब n होता है वहां पे, वेरी गुड, जब n होता है वहां पे क्या कहेंगे, n में हम 2 ऐड करेंगे और फिर हम उसको स्क्वायर करेंगे। That is going to be the nth term formula for the sequence n plus 2 the whole square. A lot of times you also have to deal with sequences like these जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर सीक्वेंस है, क्यूब सीक्वेंस है, वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे। आपको इस तरह से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ सकता है उसको कि अच्छा उसमें कुछ ऐड करके उसके बाद आप स्क्वायर कर रहे हो, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद स्क्वायर कर रहे हो। Does this make sense to everyone? Any issues with this? Any issues with this? Adam, in about 30 minutes, around 4:45 and 4:40 and 4:45. Okay, good. So this is how you find the nth term of sequences like these. Acha, let me write another sequence here. So let me write another sequence here. It's called the sequence C, or let's say it looks something like this. It's 0, 1, and then 8, 27, 64, and 0.25. What about this? What about this? इसकी हमारे पास nth term क्या होगी? इसकी nth term क्या होगी? तो एक तो हमें square numbers देखे. Are these squares? These are not squares, right? ये squares तो नहीं है. These are all cube numbers. These are all cube numbers. 1 is 1 ka cube, right? Yes, these are all cube numbers exactly. 1 is 1 cube, 8 is 2 cube, 0 is 0 cube, right? 27 is 3 cube, then 64 is 4 cube, and so on. लेकिन आप ऊपर देखें हमारी टर्म नंबर क्या है? टर्म नंबर जब 1 थी हम क्या कर रहे हैं? हम 0 का क्यूब कर रहे हैं। टर्म नंबर 3 है फॉर इंस्टेंस, हम 2 का क्यूब कर रहे हैं। टर्म नंबर 5 है, हम 5 का क्यूब नहीं कर रहे, हम 4 का क्यूब कर रहे हैं। टर्म नंबर 6 है, हम किसका क्यूब कर रहे हैं? हम 5 का क्यूब कर रहे हैं। सो हर टर्म में से हम पहले 1 माइनस करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वी सब्ट्रैक्ट 1 बिफोर। पहले हम 1 माइनस करते हैं, उसके बाद उसका क्यूब करते हैं। सो जो भी ऊपर टर्म नंबर होता है उसमें से पहले 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि जब n होगा उसमें से n में से 1 माइनस कर देंगे, एंड देन वी टेक क्यूब ऑफ दैट। पहले क्यूब नहीं करना, पहले हमने -1 किया है, उसके बाद क्यूब किया है। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी इश्यूज? सो ये हमारे पास अक्सर इस तरह से होता है स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर सीक्वेंसेस और क्यूबिक सीक्वेंसेस के अंदर। ओके Manahil, लेट मी गो ओवर दिस अगेन। सो हमारे पास ये क्यूब नंबर्स हैं, यू अंडरस्टैंड until that point. ये सारे क्यूब नंबर्स है, 1, 8, 27, 64, 125, all of these are cube numbers. लेकिन nth term formula आपके टर्म नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारी फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म क्या है? 0। सेकेंड टर्म is 1 cube. फोर्थ टर्म फॉर इंस्टेंस is 3 cube. तो जो भी ऊपर टर्म होती है, टर्म नंबर होता है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म में 1 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, फिर उसका क्यूब करते हैं। हमारा जब 3 है ऊपर लिखा हुआ फॉर इंस्टेंस, हम 3 के वाले केस में क्या करें? 3 में से पहले हम 1 माइनस करते हैं एंड देन वी टेक क्यूब ऑफ दैट। सिमिलरली 6 पे क्या कर रहे हैं? 6 में से पहले हम 1 माइनस करते हैं एंड देन वी टेक क्यूब ऑफ दैट। सो टू इफ यू जनरलाइज दिस, और हमारे पास ये नंबर्स की बजाय n लिखा होता है ऊपर, तो nth टर्म में क्या करेंगे?
n में से हम पहले 1 माइनस करेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे. So that's the nth term formula for this sequence, for the sequence C. Okay. Yes, Isha, it can start from negative numbers. It can start from negative numbers. Squares का तो नहीं हो सकता negative से start, लेकिन cube का start हो सकता है. So theoretically it is possible, but you will not find any such questions in the past papers. In O-level past papers, you will not see any questions like that. But yes, that is possible. Mathematically, cube numbers negative हो सकते हैं. So that's perfectly possible. So for instance, you could have something like this, a sequence that looks like this: -27, -8, then you have -1, 0, 1, 8, 27, 64, and so on, right? You could have something like this. What about this now? Squares में नहीं हो सकता, क्योंकि squares तो सारे positive ही होते हैं, वो negative में नहीं जा सकते. लेकिन इसमें ये हो सकता है. So this is possible. So let's say you had a sequence like this. What do you do in this case? So let me write the term numbers here. Term number हमारे पास कौन सी आ रही है यहाँ पे? Let me write those as well. So we've got the first term, the second term, the third term, the fourth term, the fifth term, the sixth term, the seventh term, and the eighth term. How do you write the nth term formula for the sequence? जो नीचे sequence लिखा हुआ है, हमने इसकी सारी term numbers लिखी हैं ऊपर. What about the nth term? Nth term of the sequence, what would that be? What type of numbers are these? आपको क्या लग रहा है? ये सारे cubic numbers हैं, right? सारे cubic numbers हैं. हमें ये तो पता है कि something cube होगा, something raised to power 3. But what raised to power 3? Let's think about this. -27 क्या होता है? -27 is the cube of -3. -3 का cube. -3 कैसे आएगा? 1 में से 4 minus करके. ठीक है. Similarly, let's take another example. 0 कहाँ से आएगा? 0 cube. 4 में से हम 4 minus करेंगे, फिर हमारे पास 0 आता है, फिर क्यूब बनता है. If we generalize all of them, what do we get from that? We get n minus 4 का whole cube. So this sequence is going to be n minus 4 का whole cube. तो आपको ये square और cubic sequences का idea होना चाहिए. Okay? ये square और cubic functions का idea आपको होना चाहिए. ठीक है. सो इसका जनरल टर्म फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? n minus 4 whole cube. So let's say आपने इसकी सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी होती, जस्ट टू कंफर्म, सिक्स्थ टर्म हमने निकालनी है, राइट? तो फॉर्मूला क्या है इसका? n minus 4 whole cube. n क्या है? 6. 6 minus 4 whole cube, that gives you 2 का cube, which is 8. And you can confirm that in the sequence here. Sixth term हमारे पास 8 थी वहां पे. That means the formula is correct. n minus 4 whole cube. हमने हम इसको वेरीफाई भी कर लिया just by inputting one value and confirming कि अच्छा वही आ रही है जो हमारे पास ऊपर सीक्वेंस में आ रहा है. Is that okay? Any issues with this? Any problems with this? Okay, good. So you have an idea about these sequences now. अच्छा क्या होता है, आपके पास कुछ quadratic sequences आते हैं. Quadratic sequences. अब quadratic sequences की exact nth term निकालना using some formula, that's not part of your syllabus as such. आप किसी तरह से उस question से ही figure out कर सकते हो. But sometimes what happens is it's not as clear, इतना आसान नहीं होता उसको figure out करना. फिर आप उसके लिए हमारे पास एक formula exist करता है that we can use when we are not able to figure it out. So let me explain what I mean by that. So let's say you have a sequence that looks something like this. You have 2, 5, and in fact, let me just take an example from somewhere. Or let's just do it like this. 2, 5, and 10, 17, 26, 37. Yeah. So let's say you got something like this. You got this sequence here. Now,
does this fall into any of those categories that we have discussed until now? So we've discussed arithmetic sequences. Arithmetic sequences में क्या होता था? The difference used to be constant. What is the difference here? This is 3. This is 5. Well, it's not constant. Difference जो है वो change होता जा रहा है, right? So the differences are not constant. So that's not happening here. Is there a square? Square numbers लग रहे हैं आपको कहीं से? नहीं लग रहे. Cubic numbers लग रहे हैं आपको कहीं से? नहीं लग रहे. So it's none of those things, right? Now, जब आपके पास उन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से इसको किसी तरह से फिगर आउट कर सकोगे. हम उसकी कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं. उसकी कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं in a few minutes. लेकिन ये एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें आपके पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि अगर आपको वो क्वेश्चन से नहीं समझ आता, अगेन अगर आप उसको क्वेश्चन से फिगर आउट कर लेते हो, दैट्स बेटर, दैट्स गोइंग टू बी क्विकर, एंड दैट्स व्हाट कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट्स यू टू डू एज वेल, आइडियली. लेकिन अगर आप वो नहीं फिगर आउट कर पाते, एक बैकअप ऑप्शन हमारे पास होती है फॉर दीज टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस जहां पे हमारे पास ना सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए. नाउ व्हाट डज दैट मीन? हम डिफरेंस फाइंड करें यहाँ पे. These differences are, 7, 9, then you have 11. Although these differences are not constant, इसको हम कहते हैं first difference. ये हमारे first differences हैं. ठीक है, these are our first differences. अगर हम यहाँ पे इसका एक और दफा difference ले लें, इसका अगर हम एक और दफा difference ले लें, उसमें क्या होता है? ये जो differences हैं, इनके differences अगर हम ले लें, differences के differences ले लें, वो क्या आते हैं? We get 2 here, we get 2 here, we get 2 here, and we get 2 here. So difference का difference, which is called the second difference, that turns out to be constant here. Adam, that's exactly right. That's what the sequence is eventually. But sometimes you will not be able to figure it out mentally. So if you can do that, so in this case, for instance, it's doable, right? To do it mentally. But sometimes क्या होता है, आपको figure out नहीं कर पाते, ठीक है? So what do you do in those situations? आप देखोगे first difference आपके पास क्या आ रहा है, और आप देखोगे आपके पास second difference क्या आ रहा है. Okay, first और second. इसको multiple methods exist करते हैं. एक तरीका क्या हो सकता है, आपने जब identify कर लिया that the second difference is constant. Second difference is constant. अगर ये constant आ जाए, अगर आपका second difference constant आ जाए और first difference constant नहीं था, that means it's a quadratic sequence. इस तरह के sequence को हम कहते हैं quadratic sequence. क्या मतलब? इसकी जो nth term होगी उसमें n की power 2 होगी, ठीक है? इसमें n की power क्या होगी? 2 होगी. Yes, exactly, Adam. So that's what I'm going to tell about. So इसको हम कहते हैं quadratic sequence. इसका हमारे पास एक general formula होता है, which I should repeat. It's not part of your syllabus. It is not part of your syllabus, but you can use it as a backup. अगर आपको और कुछ सही समझ आता है वहां पे, आप इसको as a backup use कर सकते हो. Okay, इसको as a backup use कर सकते हो. Now, how do we, so what exactly is this formula? Let's talk about this. So what exactly is this formula? So basically what we do is, we have A, that is again the first term, plus n minus 1 into D, as before, जो हमारे पास arithmetic sequence में होता था, वही चीज हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे, n-1 into d. लेकिन एक कौन सा difference? We've got two types of differences here. We've got the first difference, जिसको हम d1 कह लेते हैं. We've got the second difference, जिसको हम d2 कह लेते हैं. ठीक है? तो यहाँ तक पहले तो हमारे पास d1 तक, it's the same thing as the arithmetic sequence. वही फॉर्मूला जो हम arithmetic sequence में यूज करते हैं, वही चीज हम पहले यहाँ पे हमारे पास होगी. उसके बाद we add something to it, and that's this thing, 1/2 into d2
second difference second difference multiplied by 1 over 2, second difference over 2 multiplied by n minus 1 into n minus 2. Now that's fairly complicated. It's not very easy to remember. Those of you who can do it, just do it. You know, it might help you in some questions जहाँ पे आपको वहाँ पे figure out नहीं कर पाते आप. You can use this formula as a backup, and it will always work for you in cases like these जहाँ पे आपका second difference constant आता है. क्या करोगे? आपने सिर्फ इसके अंदर values input करनी है. Now remember, A is still the first term of the sequence. That's 2 plus n minus 1 into d1. d1 क्या है? Difference. आपका जो difference. अच्छा, d1 जो है ना, that's actually the difference between the first term and the second term. So d1 में यहाँ पे clarify कर दो. d1 जो होता है, that is इस केस के अंदर it's the difference between first and second term. ठीक है, हम सिर्फ ये पहले वाले डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बाकियों की नहीं. We're only talking about the first difference here. पहली दो टर्म्स का डिफरेंस, that is 3 here. ये वो यूज करेंगे यहाँ पे, सिर्फ पहली वाली दो टर्म्स का डिफरेंस. बाकी भी फर्स्ट डिफरेंसेस हैं सारे, लेकिन वो नहीं यूज करने, सिर्फ पहली दो टर्म्स का डिफरेंस. 2 और 5 का डिफरेंस, right? 5 minus 2, that's 3. We put 3 there plus 1 over 2 into d2. d2 तब कांस्टेंट होगा, सिर्फ तब आप यूज करोगे जब सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो. सेकंड डिफरेंस क्या है? 2 into n minus 1 into n minus 2. उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो if you want. तो क्या बनेगा? तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, it becomes n square minus n minus 2n, that's minus 3n plus 2. ठीक है, now you just simplify this. 2 plus 3n minus 3, ये cancel हो गए, plus n square minus 3n plus 2. What does that give us? That gives us, so this gets cancelled, we are left with n square plus 1. That is your sequence. So ये formula जो है हमारे पास, ये हम use कर सकते हैं for quadratic sequences. Now let me write down what the terms there mean. A is again the first term. A आपकी first term है. D1 जो मैंने वहां पे लिखा है, it's the difference between term 1, between the first and second terms. Right, second term minus the first term, or you can just write it like that. So it's the second term minus the first term. ठीक है? अच्छा, D2 क्या है? It's the second difference. तो दूसरी दफा आपने डिफरेंस लिया है, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा. जब कांस्टेंट आएगा तभी आप यूज कर सकते हो, वरना नहीं यूज कर सकते हो फॉर्मूला. सेकंड डिफरेंस कॉमन आ जाए, ये आपका D2 है, ये आपने इसके अंदर इनपुट कर देनी है वैल्यूज. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द nth टर्म फॉर्मूला. लेकिन आप देखोगे ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, दे आइदर गोइंग टू बी 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स. That means this is going to be quite some working for that many marks. काफी मतलब ये लंबी working है, 1 या 2 मार्क्स के लिए. So this is not required. इसके बगैर आप सारे sequences वाले questions कर सकते हो, and we will talk about some of them, about just a couple of them today, and then more tomorrow when we do more practice questions on sequences. So let's look at a few questions now that will clarify some more concepts. Now इसमें एक और चीज आपको देखनी होती है इन सीक्वेंसेस, इन फॉर्मूलाज के अलावा, एंड दैट इज कि जो आपके पास टेबल्स बने होंगे उसमें आपको देखना है कि वर्टिकली आप कोई सीक्वेंस बना सको, कोई चीज ऐड करके, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करके, कोई चीज मल्टीप्लाई करके. सो वी लुक एट a couple of questions now that will help us clarify this particular concept. Vertically कोई pattern हमारे पास बन रहा हो, इसको कैसे figure out करना है, and then we will end our today's class with that.
But tomorrow we will be we'll be doing more past paper practice on this particular topic. So just give me a few seconds now. So meanwhile, if you have any questions, let me know at this point. And meanwhile, I'm just importing some questions here. It'll take a few seconds for me to paste the questions here. Meanwhile, if you have any questions, you can let me know. Okay, let's start with this one. I'm sorry, it takes some time uploading pictures here. It's a bit easier on Zoom sometimes. यहाँ पे थोड़ा सा time लग जाता है. I'm trying to be quicker. Tomorrow it's going to be around 3 p.m. Abdullah, in the other group, we will have tomorrow's class at 3 p.m. inshallah, around that time. Okay, so let's look at this question. Let's look at this question. By the way, we have, so some of you already know about that. We also have another past paper session going on here in this particular group. So those of you who want to join that, you can join that using this link that I'm posting here. So we have that past paper session going on there. We have live classes, 4 classes every week on that group. In fact, now we have 5 classes every week on that group, in which we're doing past papers. We're doing topical past papers of the topics that we discuss here on Mondays or Tuesdays, and then we have yearly past papers going on as well. We're done with many papers from 2016 to 2019 already, and now we will be moving on to the 2020 papers. We will be doing all variants of both the sessions there. So anybody is interested, you can also have a look at that. The recordings of those sessions are also available at this link. So this is my YouTube channel. You can also have a look at that. You'll find those recordings there on YouTube. So if you are just interested in the recordings आपको वहाँ पे YouTube पे मिल जाएंगी. But if you want to join any of those live classes, that's the group link for that. जो ऊपर आपका नून वाला link है, that's for live classes. और नीचे जो YouTube वाला है, that's for recordings. You can access all recordings of those past paper sessions there as well. Okay, now let's have a look at this question. Okay, so it disappeared again. Okay. All right, so there it is. So let's have a look at this. So take a few seconds to just digest what is being asked here, and then we will discuss this, okay? देखिए कुछ boxes नजर आ रहे हैं ऊपर, black boxes. I'm just copying the other part meanwhile. Okay, yeah. Let's look at this now. We have the sequence of diagrams below that shows small black and small white squares in an arrangement to form large squares. अच्छा, तो देखिए small black and white squares हैं जो आपको इन figures के अंदर नजर आ रहे हैं,
right? So you've got one black box here, you've got another white box here, you've got another black box here, and so on. White squares, right? Squares nazar aa rahe hain aapko. Now, the table below shows the numbers of black and white squares in each diagram. So diagram N, ये diagram 1 है, diagram 2 है, you have diagram 3 here, and so on. ठीक है? तो यानी कि फर्स्ट डायग्राम में आपके कितने ब्लैक स्क्वायर्स हैं, कितने वाइट स्क्वायर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना आ रहा है. ठीक है? That's what we have here. Now, first of all, it says for each diagram, how many more black squares are there than the white squares? For each diagram, how many more black squares are there than the white squares? देखिए black squares कितने हैं? यहाँ पे 5 थे, इधर कितने हैं? 4. 1 का डिफरेंस है. 13 minus 12, ये भी 1 का डिफरेंस है. 25 minus 24, ये भी 1 का डिफरेंस है. So we have one more black square than the white squares in all of these diagrams. Black square एक ज़्यादा है white से इन सारी diagrams के अंदर. Because that's what we understand from there. So that was pretty straightforward. But now let's look at the next parts of this. So उसके बाद वो क्या कहता है? इसको मैं साइड पे ले जाऊँ वहाँ पे थोड़ा सा इसको इंपोर्ट कर लूँ दूसरे पार्ट को. Then we are asked about this. On the table that's given, we have to complete the column for diagram 4. So that's what we have to do first. Let me take that to the side for now. हमने table complete करना है for diagram 4. 4 के लिए ये table complete करना है, diagram 4 के लिए. ठीक है? Diagram 3 के लिए हमारे पास सारे numbers नजर आ रहे हैं. 4 में क्या होगा? So let's look at these sequences. तो क्या नजर आ रहा है आपको? कैसे कहाँ से start करेंगे? So there could be multiple ways of thinking about it, but you know, one possibility is that you look at the differences of the consecutive terms, right? So, for example, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 और 12 में कितना difference है? It's 8. 12 और 24 में कितना difference है? This is 12. ये तो difference constant नहीं है. What happens here? 5 और 13 में कितना difference है? 8. 13 और 25 में कितना difference है? 12. यहाँ से भी हमारे पास कोई constant difference तो नहीं आ रहा. But there could be a pattern. At this point, we can only guess कि एक possibility क्या हो सकती है? 8 है, ये 12 है, तो हो सकता है, we cannot be sure about this, हो सकता है अगले का difference जो है, उनके 4 से difference बढ़ रहा है, अगले का difference हो सकता है 16 हो. But let's look at the third one. इस third में आपको कोई pattern नजर आ रहा है? What type of numbers do these look like? 9, 25, 49. What type of numbers are these? What type of numbers are these? 9, 25, 45, 49. ये कैसे numbers हैं? Are we familiar with these numbers? 9, 25, 49. What's common between these numbers? इनमें क्या common है? Any idea, anyone? इन सारे numbers के अंदर क्या चीज common है? These are all square numbers, right? So these are all square numbers. 9 भी एक square है, 25 भी एक square है, 49 भी एक square. So this is 3 का square, this is 5 का square, this is 7 का square. तो अगला वाला क्या होना चाहिए? This should be 9 का square. So this should be 81 here. ठीक है? ये हमारे पास क्या होना चाहिए? 81. अभी उसने पिछले पार्ट में हमसे क्या निकलवाया है? How many more black squares are there than the white squares? Black, हर डायग्राम के अंदर एक ब्लैक स्क्वायर ज्यादा है व्हाइट से. तो बेसिकली अगर आप देखें हर पैटर्न के अंदर ये 49 है, 49 का हाफ क्या होता है? 24.5. एक में 24 आ रहा है, एक में 25 आ रहा है, एक में 24.5 से छोटा नंबर, एक में 24.5 से बड़ा नंबर. इसी तरह से 25 का हाफ क्या होता है? 12.5.
एक में 12 आ रहा है, एक में 13 आ रहा है, एक छोटा नंबर उससे, एक उससे बड़ा, उनमें डिफरेंस कौन सा? तो बेसिकली द पैटर्न इज जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा उसका हाफ कर लो आप तकरीबन, दैट्स 40.5। एक में 40 आ जाएगा, एक में 41 आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंस हमेशा 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट you may have to think about from the question itself. आपको क्वेश्चन के अंदर से कुछ पैटर्न्स खुद से फिगर आउट करने हो सकते हैं, आप इनको कंपेयर करोगे आपस के अंदर, उसने पिछले पॉइंट में आपसे हो सकता है कुछ ऐसी चीज निकलवा ली हो जो आपको यूज करनी हो। सो दिस इज व्हाट यू कुड यूज हियर। अब देखें ये पहले दोनों पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न भी और ये पैटर्न भी, ये दोनों क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस हैं, दोनों क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस। If you wanted, you could use that formula that we just discussed. लेकिन it's only a 1 mark question. It's a 1 mark question. अगर आप वो हर पैटर्न को अलग अलग निकालने बैठ जाएंगे, it'll take a lot of time and it's not worth it, right? So इसमें प्रैक्टिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर के अंदर। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, you will understand how to figure these patterns out by yourself during these questions, because जो हमें आने चाहिए जो पैटर्न वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक चीज जो हमें सिर्फ देखनी होगी वो वर्टिकली कोई एक पैटर्न से हम बाकी इस तरह से इन्फर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस we'll do another example for that and that will make it clear for us कि वर्टिकल पैटर्न हमारे पास किस किस तरह के फॉर इंस्टेंस होते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। But that's what is actually that's all that we need to know about in terms of the concepts कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए arithmetic sequence क्या है, square cube numbers के किस तरह से patterns बनते हैं, और quadratic का just as a backup अगर आप वहां पे नहीं figure out कर सकते आप वहां पे apply कर सकते हो। So खैर, let's complete this question first and then we'll discuss another one. It says write down an expression in terms of n for the total number of black and white squares in diagram n. Achha. So let's do that now. Total number of black and white squares in diagram n, इसकी अब आपको एक expression लिखनी है, ठीक है? So let me do that here. पैटर्न लिख देते हैं 9, 25, 49 and 81 and so on, ठीक है? That's this last sequence. इसकी आपको nth term लिखनी है, ठीक है? अब देखिए ऊपर हमारे पास terms कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। लास्ट टर्म का हमें क्या करना है? nth term formula लिखना है। Again, it's a 1 mark question. Remember, it's a 1 mark question. It is a quadratic sequence. How do we know that? Let's figure this out. 9 और 25 का difference क्या होता है? That's 16. 25 और 49 का difference क्या है? That is 24. 49 और 81 का difference क्या है? That is 32. Second difference निकालें, that's 8 here, that's 8 here. तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला, उसमें a की वैल्यू 9 इनपुट कर दो, b1 की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस पहला वाला that's 16, b1 की वैल्यू 16 इनपुट कर दो, b2 की वैल्यू 8 इनपुट कर दो। उस फॉर्मूला के अंदर, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूला के अंदर, you will figure this formula. You'll be able to figure this nth term out. Okay? वो आपके पास उसके अंदर ये वैल्यूज इनपुट करने से आ जाएंगी, और जो nth वाला फॉर्मूला में लिखा था पीछे उसको आप यूज कर सकते हो ये वैल्यूज इनपुट कर, ठीक है? So that's one possibility. But again, अब्दुल्ला, अगर सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, अगर सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, then you have to figure it out from this itself, from the table that's given itself. That is your go-to option, right?
ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो कैम्ब्रिज डज एक्सपेक्ट यू कि आप यहीं से कोई पैटर्न फिगर आउट कर सकोगे इसमें आपको वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला भी खुद से अप्लाई ना करना पड़े, आप इसको डायरेक्टली इस तरह से फिगर आउट कर सकोगे इस तरह से. But how do you figure this out now using the information that is given to us here? किस तरह से हम इस given information को use करके इसकी nth term figure out करें? Now let's think about this. Let's think about this. हमारे पास टर्म नंबर्स हैं 1, 2, 3 and 4. ठीक है, अगर डायरेक्टली करना होता है, अगर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, इफ यू वांटेड टू डू दिस डायरेक्टली, हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस? क्या आप पहली दो टर्म्स इस तरह से फिगर आउट कर सकते हो कि अगर आप इसका फिगर आउट कर लो, इसका फिगर आउट कर लो, दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी. अब इसका फॉर्मूला फिगर आउट कर लो, इसका फिगर आउट कर लो, उसके बाद आप इसको किस तरह से फिगर आउट कर सकते हो. कैन यू डू दैट? बट अगेन they are also not very simple. Black वाला is also a quadratic sequence, वो भी directly इस तरह से figure out करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. जो white squares वाला है वो भी एक quadratic sequence है, वो भी इस तरह से figure out करना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हमें एक चीज तो यहाँ पे नजर आई है नीचे, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है. ये तो हमने figure out किया पहले. This was the first thing that we figured out. तो हमने पिछले पार्ट में figure out किया था. Right? वो हमने पिछले बार में फिगर आउट किया था. Abdullah, we're not looking for the white one. We're looking for the total number of black and white squares. हम total number का nth term निकालना चाह रहे हैं, right? So that's this sequence here. अब देखिए ये sequence क्या है? This sequence is basically 3 square, then you have 5 square, then you've got 7 square, then you've got 9 square, and so on. तो nth टर्म जो होगी वो भी होनी तो समथिंग स्क्वायर होनी चाहिए, समथिंग स्क्वायर, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट मच? किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए. अब ये जो अंदर वाले नंबर्स हैं ये कैसे फिगर आउट करें हम? ये 3, 5, 7, 9, how do you figure these numbers out? How do you figure these numbers out that are here? 3, 5, 7 and 9. ये तो हमें पता है इनका पैटर्न. 3, 5, 7, 9 ये कैसे नंबर्स हैं? ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ये तो हमें पता है, ये तो बहुत सिंपल है. We know the difference is 2, right? The difference is 2. You just apply this formula on these a plus n minus 1 into d. ये जो नीचे वाले नंबर है, स्क्वायर के नीचे वाले नंबर 3, 5, 7 and 9, these are just following arithmetic sequence, right? So that's 3 plus n minus 1 times d times 2. इसको आप evaluate करोगे, this will turn out to be 2n and plus 1. This will be 2n plus 1. ये जो नीचे वाले numbers हैं सारे, इनका nth term formula हमारे पास क्या बन रहा है? It's 2n plus 1. So 2n plus 1 अब basically आपने क्या करना है? Square करना है. 2n plus 1 का आपको simply square कर देना है. Does that make sense? 2n plus 1 का simply हमने square कर देना है. Again, you could use the quadratic sequence वाला formula here, but what I'm telling you is the Cambridge does not expect you to use that. मतलब they will still give you marks, yes, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 मार्क दिया हुआ है इसका, और उसकी working is quite long. जो आप उस formula apply करते हो, उसको simplify करते हो, that's definitely worth more than 1 mark. उन्होंने सिर्फ 1 मार्क इसलिए दिया है क्योंकि आप ये डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हो, जो आप हमेशा कर सकते होगे in questions like these. ठीक है, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने सिर्फ यूज किया है और थोड़ा सा दिमाग यूज किया है कि अच्छा ये स्क्वायर्स थे सारे, ये नीचे वाले नंबर्स हमारे पास कैसे आ सकते थे? वो तो एक सिंपल सीक्वेंस है, 2n plus 1. We can get this from here. Okay, let's do one more question and then we will do more past paper practice on this tomorrow, inshallah. But let's do one more before we end here, and you will realize it's also very similar to very similar in the sense that you will have to use
some vertical sequence wala case in that as well. Sure. This one. Let's do this one. All right, so let's have a look at this one. Yeah, I'm sorry. I was just copying the question, so it should be visible to you now. All right. So can you hear me now? Am I audible now? Okay. Let's have a look at this one. So again, what do you have to do? We have this series of diagrams that we see here. Diagram 1, 2, 3, and then diagram 4. This table here shows the numbers of each type of triangle used in the diagrams. We have to complete the column for the diagram 4. ठीक है, अभी कौन-कौन सी इसमें figures हैं? Gray triangles हैं नजर आ रही हैं आपको ऊपर. ठीक है, you've got some white triangles. तो दरमियान में empty part लग रहा है. That's basically white triangles. Then we have some black triangles. Okay. Yes. So you don't really need to worry about the figures as such. आपने सिर्फ ये नंबर सीक्वेंसेस को ही देखना है. यहाँ पे फिगर्स का काम सिर्फ तब होता है जब आपसे आपको कभी वो कहता है फिगर को देख के आपने कोई चीज लिखनी होती है या फिर आपको अगली डायग्राम बनानी होती है, अगली डायग्राम को ड्रॉ करनी होती है कभी कभी. सो दैट्स व्हेन यू हैव टू यूज द फिगर्स. अदरवाइज दीस नंबर्स आर इनफ, यू कैन जस्ट यूज देम. अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट द सीक्वेंस. 2 4 6. What do you get the next one? That's even numbers. 2 4 6. Next number क्या होना चाहिए? It should just be 8, right? Differences 2 आ रहे हैं सब में. 2 4 6 8. These are all even numbers. Okay. अच्छा. What about the right triangle? What type of numbers are these? 1 4 9. These are square numbers. These are all square numbers. Right? 1 4 9. Next square number क्या होना चाहिए? That is 16. ठीक है. अच्छा. What about this one now? Black triangles. How do you figure this out? 0 से 2 पे जा रहे हैं, फिर 6 पे जा रहे हैं. How do you get the next one? How do we get the next one in this case? Any idea? 12, but why? Why would we say 12 here? Why would what is the reasoning for that? Okay, very good. So basically the difference is 2 here, and then the difference is 4. So the next difference we can hope is going to be 6 here. So that gives us 12. अच्छा, उसके बाद वो कहता है by considering the number patterns in the table, find in terms of n the expressions for x, y, and z. Nth term for gray triangle, for white triangle, for black triangle. How do you find the nth terms for these? अच्छा, पहला वाला तो बहुत सिंपल है. आपको वैसे तो आप उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस से भी कर सकते हो if you want, बट वो काफी क्लियर है. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है. ठीक है. So even though it's an arithmetic sequence, but it's clearly visible from there. This is going to be 2 times n. Right? So that's really straightforward. It's 2n. पहला वाला ग्रे ट्रायंगल्स का जो भी आपके पास ऊपर वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास ये आ जाता है. ठीक है. So that's 2n. What about white triangles here? These are all square numbers. Abdullah, is it going to be n plus 1 whole square? Really? It's diagram 1. 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है. जो भी आपके पास नंबर है उसी का स्क्वायर कर रहे हैं. जो भी ऊपर नंबर होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं. That's just n square. That's just n square. So y is also fairly straightforward. Simply n square. Okay. Acha. What about the last one here? Now,
it's neither squares, it's cubes, it's not arithmetic sequence because difference constant नहीं है. अगर हम second difference देखें, that is constant. Second difference constant आता है. So this is a quadratic sequence. So quadratic sequence वाला formula आप use कर सकते थे अगर आपको कुछ और समझ नहीं आती यहाँ. अगर आपको कुछ और समझ नहीं आती यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते थे? You would say A is 0. पहली टर्म 0 है. पहली दो टर्म का डिफरेंस 0 और 2 का डिफरेंस, that's 2. Second difference, that's 2. ये जाके उस फॉर्मूला के अंदर इनपुट कर देते, you will get the nth term for that, right? But is there a way to do it without that? Can we do it without that? इसके बगैर कर सकते हैं. आपको देखना है वर्टिकली कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ. ये 0 कैसे आ सकता है? ये 2 कैसे आ रहा है? ये 6 कैसे आ रहा है? 6 ऊपर वाली किसी टर्म्स को कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कैन वी गेट दिस 6 somehow? Any ideas about this? So आप देखें, ये जो 9 है, फॉर इंस्टेंस, ये जो 9 है, इसमें से हम ये ऊपर वाली टर्म माइनस कर देते हैं ओरिजिनल, तो हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है. अच्छा, बट इज दैट ओनली ट्रू फॉर दिस? क्या बाकी में अप्लाई हो रहा है ये केस? 16 में से अगर ऊपर वाली टर्म ओरिजिनल माइनस कर दें, टर्म नंबर माइनस कर दें, उससे भी हमें 12 मिलता है. वेल, that looks like a pattern. अच्छा, 4 में से 2 माइनस करें, does this apply here? Well, yes, it works here as well. अच्छा, 1 में से 1 माइनस करें, अच्छा यहाँ पे भी चल रहा है. So basically this is a pattern, this is a vertical pattern that you can see here. ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम थी. वाइट ट्रायंगल्स में से पैटर्न नंबर या डायग्राम नंबर माइनस कर दें, आपके पास ये ब्लैक ट्रायंगल्स आ जाते हैं. 4 में से 2 माइनस किया, so this number is 4 minus 2. So this 0 is 1 minus 1. ठीक है. This 2 is 4 minus 2. The 6 here is 9 minus 3. This 12 here is 16 minus 4. तो जो आपका वाइट ट्रायंगल वाला नंबर है उसमें से हम n माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. दैट मींस n स्क्वायर जो था यहाँ पे, उसमें से हम ऊपर वाला नंबर n माइनस कर देंगे. Get this, n square minus n. That is why you will only have 1 mark for this. आपको इसका सिर्फ 1 मार्क दिया होगा. अगर आप क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करने बैठोगे, it will take a lot of time. Even though you'll get the answer from that. अगर आपको ये नहीं नजर आता, ये आप नहीं figure out कर सकते, then that is the backup, right? Always keep that as a backup. Try to figure it out directly like this. किस तरह से आपको directly यहाँ पे in one single step आप वो figure out कर सकोगे nth term formula क्या होना चाहिए. Okay? n square कैसे आ सकता है आदम? n square तो नहीं हो सकता है. तो 1 का स्क्वायर 0 तो नहीं होता. n square कैसे आ रहा है? Are you saying using that formula? उस formula से वो आ रहा है आपका? अच्छा, let's just verify that. Let's just verify that. So let's do it. अच्छा, हमने कहा a is 0 और d1 is the difference of the first two terms, that is 2, and d2 is the second difference is also 2. Achha, let's apply that formula. I find it hard to remember myself because it's quite long and you don't actually need it much, but a plus n minus 1 into d1 plus half into d2 into n minus 1 into n minus 2. Something like this, right? So a plus n minus 1 into d1 plus half into n minus 1 into n minus 2 into d2. Yeah, so that's first the formula. Okay, so all you have to do is you just input values there. 0 plus n minus 1 into the difference. The first difference, that's 2 plus half into 2 into n square minus 3n plus 2. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2n minus 2 plus n square
minus 3n plus 2, and this gets cancelled. We're left with n square minus n. वही आता है, n square minus n ही आता है उससे भी. But of course, it takes some time, takes some working. If you can figure it out directly, that's of course better. Okay, that will of course be better. All right. N square is for white, yes. So white का तो n square आ रहा है. We figured that out earlier. White का n square ही आता है वहां से, exactly. अच्छा, so let's look at one last question before we actually end. And then tomorrow, inshallah, we will be doing more practice. So एक question मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. Okay, let's end with this last question. So while I'm just importing that, let me just remind you, we have this other group going on in which we have live past paper sessions going on, and you can also access recordings here on this YouTube channel. All right, so where is that? Okay, let's have a look at this, and that will be the last thing that we do today on this. Yusuf, the live sessions are paid, but recordings, of course, are free on YouTube. Yeah, Ahmed, we're just starting. Just give me about 5 to 10 minutes. We will be starting that. So I'm just ending it in a few minutes. Just the last question. We will be moving on to that. Okay. So the first 4 terms, U1, U2, U3, and U4 in a sequence of numbers are given by this. Evaluate U5. आपको next term evaluate करनी. Okay. अब देखिए इसमें कोई भी direct उस तरह से sequence apply नहीं हो रहा. But you have to look vertically. What is the pattern that you are following here? आपने U5 evaluate करना है, right? 11, 22, 37, 56, right? It's hard to figure out कि क्या pattern बन रहा है exactly. But if you look at here on the left side, what do you have here? You've got 1, 2, 3, 4, these numbers coming like this. 1, 2, 3, 4. Next number क्या होना चाहिए? Next number should be 5. Okay. Next number should be 5. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं 2, 3, 4, 5. Next क्या होना चाहिए? Next should be 6. That's 5 into 6. अच्छा, what's happening here? 3, 4, 5, 6. Next number क्या आना चाहिए? It should be 7. That's plus 7 square. ये आप calculator से evaluate कर लोगे ये क्या आता है? So 5 into 6, that's 30. 30 plus 49. That will be 79. Okay, so that's your term U5. तो देखिए इसमें कोई भी उस तरह से rule apply नहीं हो रहा. Such आपको देखना है vertically कि क्या pattern लग रहा है. So 1, 2, 3, 4, 5. इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6 आ गया. 3, 4, 5, 6, 7. 7 का square कर दिया. इसको evaluate कर लेंगे. That turns out to be 79 there. Okay. Then you have to write down an expression in terms of n for the nth term un of the sequence. Okay, आपने कोई expression लिखनी है in terms of n for the nth term of the sequence. अच्छा, now how do you write this? nth term का formula यहाँ पे कैसे लिखें? आप देखें जब ये वहां पे, so let me write it down a bit bigger here. So U5 was equal to 5 into 6 plus 7 का square. अब देखिए यहाँ पे exactly क्या हो रहा है? जब यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 आ रहा है. That means जब यहाँ पे n होगा, तो उधर भी n होएगा. ठीक है? जब यहाँ पे 5 था, उधर भी 5 है.
ओके यहाँ पे 5 था, नेक्स्ट टर्म जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट्स 1 मोर देन दैट, दैट्स अ पैटर्न दैट्स बीइंग फॉलोड हियर इन अदर टर्म्स एज वेल। देखें 1 था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 था तो 3 आ रहा था, 3 था तो 4 आ रहा था, एक बड़ा नंबर है, दैट मींस जब n होगा यहाँ पे पहला नंबर तो n आ गया, दूसरा नंबर जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी n plus 1, n में एक ऐड कर देंगे, राइट, एंड देन वी हैव प्लस समथिंग, ओके, प्लस व्हाट, प्लस में क्या कर रहे हैं 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 था उधर 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, if you look at the other numbers there, यहाँ पे 3 है, जब 3 के केस में 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 के केस में 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 के केस में 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी नंबर ये लेफ्ट पे होता है उसमें 2 ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, so we've got n plus 2 का होल स्क्वायर, that is the nth term formula for this, or you can write it like this, n into n plus 1 plus n plus 2 ka whole square, right? So you don't apply any of those methods that you know of, because ye to it's fairly complicated. You could actually do it using that quadratic sequence formula again if you wanted to, that will also work here because it's a quadratic sequence, up lag jayega, but that's the direct way of doing this. It's only 1 mark, so you can do it like this. All right, ab dekhiye vertically aapka kya pattern ban raha tha, you figure that out and you write down those values here like this. Okay, now once we have this, we have the nth term formula. अब वो कहते हैं given that un is equal to an square plus bn plus c, find the values of a, b and c. How do you evaluate this? हमारे पास un ये आ रहा है, उसने दिया हुआ है कि un is equal to an square plus bn plus c, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, उससे कंपेयर कर लोगे, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, un will be n into n plus 1, that's n square plus n plus 2 का whole square, that will be n square plus 4n plus 4. So when you simplify that, we get 2n square plus 5n plus 4. अगर उससे हम कंपेयर कर लें an square plus bn plus c से, what do we get there? We get an square plus bn plus c. तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई 4. When you just compare these, you get the values of a, b and c. All right, b के आंसर को सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई कहां पे करना है, अच्छा b के आंसर को, no we don't have to do that, right? जब भी कहते हैं ना write down का मतलब होता है you just write down something, you don't have to show any working, and only 1 mark. आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां पे, that will also be correct, but it's not required. उसने आपको कहा नहीं है कि simplified form में करना, right? उसने आपको कहा नहीं है, you don't have to do that, it's only 1 mark, just write it down like this. आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये फॉर्म पहले से आ जाएगी, अगले पार्ट में आपको आसानी हो जाएगी, if you had done that, you can also do that, that's also perfectly okay, उसमें भी कोई मसला नहीं. All right,